LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। एक आकर्षक निवेश के साथ साथ NPS समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा, और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आते हैं और हम उन पर आज चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रेजी। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले कार्यक्रम में अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा। Thank you, Nikhil. Yes, friends, the headlines first. Retail inflation at 5.55% in November 2023 remains under RBI's tolerance band. India's IIP growth rate rises to 16-month high of 11.7% in October 2023. And key domestic share indices ended lower today amid volatility. Sensex tumbled 377.50 points and Nifty ends 91 points lower. नवंबर 2023 में खुदरा महंगाई दर 5.55%। भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षा के अनुकूल। भारत का औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर 2023 में बढ़कर 16 महीने के उच्चतम स्तर 11.7% पर पहुंचा और घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख। सेंसेक्स 377 अंक और निफ्टी 91 अंक नीचे आया। Retail inflation based on Consumer Price Index (CPI) surged 5.55% in November on an annual basis as against 4.87% in October this year. Retail inflation data has remained within the Reserve Bank of India's RBI tolerance band of 2 to 6%. As per data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, showed that the food inflation for November stood at 8.70%. RBI has left the inflation aim unchanged at 5.4% in its December policy meeting. The central bank also kept the repo rate unchanged at 6.5%. So, Udayan, what do you have to say on this? That retail inflation, even the finance minister has said that inflation is now stable. 2 to 6% is what we are comfortable with, and so nothing to worry. Yeah, the good part is sometimes when you don't get a nasty surprise, Lalema, then it's actually a good news. I was going to say no news is good news. Yeah, but this news, there's no nasty. It's a little less than what some people were fearing, and it's, as you rightly mentioned, it's within the tolerance band. This was anticipated.
experts and people within the government were talking about things firming up, and primarily you've mentioned the cause. It's the food prices, and the government is in the lead up to these numbers coming out. The government has been taking steps, whether it's onions and sugar related various aspects. They have been, Tomato. So food prices, of course, that is something that will cause discomfort at every end. But then I think it's proving out to be a obstinate sort of like an obstinate child or an obstinate teen, and hopefully but these are vegetables are they're short period produces, so you can get through it. It's not as if it's a difficult thing, but it's just that it's become food prices, when they are at whatever 8% plus, they do create a discomfort. But apart from that, overall this is one can handle this news. So that means the minor ripples that we see here and there in inflation due to food prices, that we can attribute it to demand and supply. Yeah, and sometimes you just have to tinker with it. Vegetables are things that you can tinker with. Sometimes you just have to figure out the supply, holding on to little bit of a short-term export-related measures. But these are things within our control. But if there's one thing that needs to be addressed, and it's being done, which is basically food inflation. Yeah. उद्यन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, आंकड़े बदल जाते हैं और कभी अच्छे भी मिलते हैं, कभी बुरे मिलते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी हम तुलना करते हैं पिछले वर्ष के आंकड़ों के और इस वर्ष के आंकड़ों की, जहां पिछले वर्ष या उसकी एक साल पहले घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन सरकार ने तमाम प्रयास किए, कीमतों को नियंत्रित किया, और अगर अभी के हालात में हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक लगाम लगा रखी है सरकार ने। यही हम प्याज और टमाटर की चीज़ों में भी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेट, अगर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें तो हमें नज़र नहीं आती हैं, तो सरकार को इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं कि सरकार ने अपने एंड पे बहुत सारी कोशिशें की। अभी पिछले दिनों ही नया अनाउंसमेंट किया कि 2 लाख टन बफर प्याज भी खरीदेंगे और साथ में निर्यात पर भी रोक लगा दी है मार्च 2024 तक। जी, जहाँ तक जो मैं कह रहा था, सब्जियों वेजिटेबल्स जो हैं वहाँ पे वो मैनेजेबल इशू है। मुझे नहीं लगता उसमें वो बहुत लॉन्ग टर्म मुश्किल होती है। कई बार क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, सड़कों में मूवमेंट में दिक्कत आ जाती है, कुछ और इश्यूज आ जाती हैं, कई बार हार्वेस्ट आपका ठीक नहीं होता है, तो इन सब बातों से इफेक्ट तो पड़ जाता है। पर खाद्य तेल का हमारा एक लॉन्ग टर्म इशू है, जो कि एक डिफ़िकल्ट चैलेंज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। काफ़ी सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, और कई बार क्या होता है, वो चैलेंज के कारण होते हैं। सक्सेसिव गवर्नमेंट, स्टेट, राज्य और केंद्र सरकार, उसमें कोशिश ऐसे नहीं है कि कोशिश की नहीं जा रही है, कई बार वो काफ़ी ज़बरदस्त उसमें चैलेंज रहता है, और उसी के उस दायरे के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है जहाँ तक सब्जियों का सवाल है, वो तो काबू में आ जाएगा। खाद्य तेल जो है वो एक चैलेंज है लॉन्ग टर्म, जिसमें हमें उस पर काबू पाना पड़ेगा। जितना हम डोमेस्टिकली कंट्रोल्ड सप्लाई कर पाएंगे, हमारे हाथों में चीज़ें होंगी, वो उतना बेहतर होगा। दूसरी बात अगर हम देखें कि अगर आज के दौर में लॉजिस्टिक हमारा काफ़ी हद तक सुधर चुका है, बहुत ही ट्रांसपोर्टेशन हमारा काफ़ी बेहतर हो गया है, जिसे एक बड़ा कारण माना जा सकता है कि आज खाद्य पदार्थ जो हैं देश में यहाँ से वहाँ ले जाने में आसानी हो गई है पहले के मुकाबले। शायद ये भी एक कारण है कि काफ़ी चीज़ें अब नियंत्रित इन बातों से भी हो जाती हैं। वो तो है ही, वो इम्प्रूव हो रहा है, पर शायद हम जहाँ पे हैं अभी पहले से बेहतर हैं, पर जितनी हमारी प्रगति हुई उससे संतोष करना तो सही नहीं होगा, क्योंकि हमें काफ़ी और प्रगति की ज़रूरत है। पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छी बात जो हुई है, जो GST के आने की वजह से हम एक यूनिफाइड सिंगल मार्केट बन गया। पहले अलग अलग राज्यों में हम बटे हुए थे, इधर का चीज़ें उधर की, तो GST के आने से हैंड इन हैंड लॉजिस्टिक्स निकली है, उसके साथ उसको होना ही था, क्योंकि आपका जब कर प्रणाली में परिवर्तन आएगा तो आपको लॉजिस्टिक्स को भी अलाइंड होना पड़ता है। तो वो एक जैसे जैसे हम ट्रांजिशन करके बेहतर होते चले जाएंगे, वो आपको हम इन चीज़ों के बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। फिलहाल समय हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे बात करेंगे।
जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back, friends. You are tuned in to Market Mantra, and we have Udayan Ray as our guest today. Well, moving on, India's industrial production in October rose to a 16-month high of 11.7% in October 2023 against a contraction of 4.1% the same period a year ago. In September this year, it had grown by 5.8%. Factory output is measured in terms of the Index of Industrial Production, IIP. As per the data released by the National Statistical Office, NSO, showed that the manufacturing sector's output grew by 10.4% in October 2023 after witnessing a contraction of 5.8% the same month last year. In September, it had grown by 4.5%. Comparisons, then we can talk about later. For the moment, let's talk about the fact that India's industrial production having gone up to a 16-month high of 11.7% in October. Is this the result of government pushing policy reforms, tightening up NPAs, MSMEs, tightening up the loose ends in MSME sector? Then, of course, then there is the GEM portal, which was created for smooth movement and of indigenous products in the market, and so on. And, of course, GST and so on. There will many reforms have been taking place over the last few years. Is this the result of all that? I would say so. And I suspect, Lalima, that this probably is the result of large players doing well. I mean, the people that you see in the stock market, I mean, listed companies, those who are the larger ones, they probably have contributed, made an outsized contribution out here. But I would suspect that for smaller enterprises, possibly in certain sectors, the challenge possibly remains. But this is in line with the GDP data that we saw. If you remember, the GDP data, it was showing there was construction and, that side of our economy, it was showing buoyancy out there. Yes. Compared to, say, the trade and services, that head that you have, that didn't, if you remember that figure, it wasn't as impressive as this side. Yes. So obviously some of the focus that has gone into manufacturing in the past couple of years, especially pandemic onwards, that could be one of the reasons. The other thing is the boost that governments is giving. It obviously doesn't happen immediately to infrastructure. So the huge amount of expenditures every time a road gets built, then there's a new market or a new area that you can access. So all those things happen. They don't happen overnight. So I'm not saying that they'll immediately show up. But over a period of time, they will have these, all the small things that small and big things you do will give you small and big results. Yes. Now, some of that I suspect is showing up, and obviously there's more to be done. Like highways, ports, we have fantastic world-class infrastructure now. Even the railway stations are now being built. The dedicated freight corridors, I mean, they are, and some of the visuals that I have seen, and you might have also seen, they are a sight to be beholden, Absolutely. We've also done very well in auto sector, realty sector. Now we have Apple manufacturing in our country, and taking a huge target of 50 million iPhones within the next 2 to 3 years. All this actually goes to show that the industrial sector is rocking.
Absolutely, Lalima. What happens is when you have a marquee brand like Apple, where you need to have certain quality, you will need to have certain amount of skill. So what happens is suddenly you have to raise your level. Whether it's manpower, whether it's infrastructure, whether it's what you're producing, it has to be absolutely world class. So suddenly there's a lift that you have to by default have to go up. So you have to raise your standards suddenly. You have to go from, say, second gear to sixth gear, although that will not be existing in a vehicle normally. That's something that you have to do. So what happens is these are sometimes, people might say, okay, this is just one project. It's not that. Sometimes the fact that a leading player in the global player is giving this kind of confidence, has so much of confidence, exhibiting so much of confidence, that pulls, that brings the it becomes spirit. the engine. It becomes the engine. Absolutely. It starts pulling, and that those spirits come in. So sometimes one would wonder why there's so much of obsession over one project, but it's just about to produce an Apple phone or Apple product. You will need a certain class of workforce. You'll need a certain amount of infrastructure. You'll need some stuff to come in smartly where it's being put together, and it needs to go out very fast. So all of it has to get to a world-class level at a very short period of time. So this is a great way, if you can pull it off, it's a great way to leapfrog. And it'll also boost confidence for the investor, for the investor as a retail investor, and those domestic investors also. That for an average citizen to think that Apple is being produced in their country, it gives a tremendous amount of confidence and boosts the sentiment of that is already happening, Lalima, and the figures are showing that our retail investors have ensured that the stock market doesn't move down. They're holding the fort. This is a huge difference from where the markets were 20 years back. If foreign institutional investors used to sell, markets would fall down. That is simply not happening. Exactly. So Indians are taking advantage of stock markets. I'm one of the gladdest guys around. उद्यन, अभी हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे. बीते दिनों में जो हमारे रेल मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट का शुभारंभ किया, उसका उद्घाटन किया, और उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत में आज लाखों करोड़ों मोबाइल हम तैयार कर रहे हैं, जिसने एआई को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी हुई है. एआई के क्षेत्र में भारत लगातार अपना एक स्टेज बनाने की कोशिश में लगा हुआ है. एआई का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकें. नो डाउट कि मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, इसका एक अहम रोल है और आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा होगा. सरकार फोकस भी इसी पर कर रही है. आप कैसे जोड़ करके देखते हैं दोनों चीज़ों को, इंडस्ट्री और एआई दोनों को? देखिए, हमारे यहाँ पे अगर एआई का कामयाब तजुर्बा होता है, और जब हम एआई सोचते हैं कि हम सोचते हैं हम आम जिंदगी से दूर, ऐसी बात नहीं है. मछुआरे, हमारे कृषि जो है, वहाँ पे कौन से मंडी में क्या दाम हो रहे हैं, वहाँ पे ले जाना, वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाना, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल, सरकारी जो स्कीम है वो एक ही क्लिक में आपको उसके बारे में जानकारी मिलना, उसको इस्तेमाल करना. तो हमारे यहाँ पे अगर कामयाब प्रयोग होता है, तो हम जैसे यूपीआई का प्रयोग हम विश्व को देने के लिए तैयार हैं, वही चीज़ हमें मिलेगी. और इतने आंकड़े, इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं और इतनी चैलेंजेस आएंगी. तो ये जो चीज़ें भारत में कामयाब होगी, वो विश्व में कामयाब होने के चांसेस उसके बहुत बेहतर है. यानी कि ये ऐसी चीज़ें जो आगे चल के मार्केट को काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकती हैं. बिल्कुल, और एफिशिएंट करती हैं और तेज़ करती हैं. जो चीज़ आप कई पेपर्स और कई दिनों में और या घंटों में करते थे, वो आप चुटकियों में करने के स्टेज में हम आ रहे हैं. और इससे हमारे लाइफ स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बेहतर हो जाएंगे, और जो हम एज अ सोसाइटी और एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हो जाएंगे. फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का. ब्रेक के उस बार फिर बात करेंगे. अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है. किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है.
मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। इश्तिहार के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम मार्केट मंत्रा में। अब घरेलू शेयर बाजार पर नजर डालें तो घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.5% की सुस्ती से 377 अंक नीचे आकर 69,551 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.40% नीचे आकर 91 अंकों की गिरावट के साथ 20,906 पर बंद हुआ। अमेरिकी मौद्रिक नीति के निर्णय और भारतीय बाजारों में महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए आज बिकवाली का रुख रहा। The key domestic share indices ended lower today as volatility was seen in the market. Sensex tumbled 377.50 points or 0.5% to close at 69,551 and Nifty declined 91 points or 0.40% to settle at 20,906. Sell-off was seen in Indian market ahead of key inflation data and the US Fed policy decision. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 11 companies appreciated while 19 companies declined. Ultratech Cement jumped 2%, Axis Bank rose 1.30% and JSW Steel appreciated over 1%. On the other hand, Sun Pharma fell 2% and Maruti declined 1.90% and IndusInd Bank lost over 1.5%. In sectoral indices at the BSE, 3 sectors gained and 17 declined. Service and metal indexes gained 0.10% each. BSE information and technology sector also ended in green. On the other side, oil and gas sector fell 1.80%. Realty index also declined 1.80%, while BSE energy tumbled 1.70%. The overall market breadth was negative as shares of 1,744 companies appreciated, while those of 2,047 declined. A total of 114 companies remained unchanged. So we were very gung-ho when the markets crossed 70. It's still not too bad at 69,000 plus. What led to the tumbling down by 377 points? This is a tactical move, Lalima, and one should not read too much because as you very rightly mentioned, the two headlines. One is that there's going to be US retail inflation data is going to come out. That is pretty much driving Federal Reserve, US Federal Reserve, which pumped in so much of money now by raising rates, is trying to suck out that money. And of course they are going to that data is going to determine how they are going to decision they are going to take. Are they going to do a rate cut? What is going to be their narrative? What is going to be their posturing? So markets are very keenly watching that because that is basically what is going to determine the course of the markets ahead. So I think it's a tactical play. The run up was good. Yes. The idea, it's smart to make some money for some of the Western institutional players. This is like year end kind of scene where you want to book some profits and show it to your bosses. So all this is happening, so not too much should be read into it, and these two events are going to determine the course the market takes, not only in the remaining part of this year, the couple of days that are left, but maybe even beyond. और दिन आज के अगर मार्केट को छोड़ करके हम थोड़ा सा पीछे से जाकर के मार्केट को वॉच करें तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया भारतीय मार्केट में जो किसी के लिए हद से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। कहीं ना कहीं इसको आप ये जिम्मेदार मानेंगे कि आरबीआई एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इसके पीछे, रेपो दर को चेंज ना करना और ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहना जिसकी वजह से मार्केट को मजबूती मिलती रहे। मानते हैं इस बात को आप? सिर्फ आरबीआई ही नहीं, गवर्नमेंट फिस्कल साइड से भी रहा है, और एक फिस्कल प्रूडेंस जो मतलब जितना आप जितनी चादर होगी उतनी आपने जब पांव पसारते हैं, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगर रखा गया है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए दूसरे गवर्नमेंट्स भी हैं, उन्होंने बिल्कुल फिस्कल जो प्रूडेंस को बिल्कुल दरकिनार करके इतने आगे बढ़ गए कि इतनी ज़्यादा मुद्रास्फीति आ गया, तो अब वापस खींचना मुश्किल
मुश्किल हो रहा है। भारत में ये काफ़ी जो जिसे कहते हैं कीपिंग द पाउडर ड्राई, आपके एम्यूनेशन को ड्राई रखा गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे लगाया गया। तो फिस्कल प्रूडेंस क्योंकि रखा गया है, उसको पुल बैक करने में, उसको पटरी में लाने के लिए फिस्कल प्रूडेंस में डेफिसिट कम रहे, कंट्रोल में रहे, उसको करने की वजह से अब क्या हो रहा है कि एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान, इंडिया इज लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। क्योंकि आप देखें चाइना में चैलेंज बरकरार है, आए दिन कोई चैलेंज आ रहा है। वहाँ पे हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आज हम जो भी 5.5% कह रहे हैं, वहाँ पे तो 0.5%, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब प्राइसेस की कॉन्ट्रैक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अलग बात है, पर वो वहाँ पे चैलेंजेस ही अलग है। तो उसके तो एक जहाँ पे चारों तरफ इतनी प्रेशर है, भारत, मैक्सिको, इंडोनेशिया ऐसे देश, फिलीपींस ऐसे देश हैं जो अलग दिख रहे हैं, और वो अटेंशन हमें मिला। इसके अलावा जैसे कि हमने बात की, भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स बिल्कुल अपने देश की इकोनॉमी में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो शायद सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोगों में से हम होंगे, और इसी की वजह से आप इसके रिजल्ट्स मार्केट्स में देख रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं हम एशियाई बाज़ारों पर। तो एशियाई बाज़ारों में आज बढ़त का रुख रहा। वैश्विक बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों के कारण ये तेज़ी देखी गई। हांगकांग का हैंग सेंग 1% से अधिक ऊपर चला गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक, दक्षिण कोरिया के कॉस्पी और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.40% का उछाल आया। जापान के निक्केई सूचकांक में 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। यूरोपीय बाजार की हम बात करें तो दिन के कारोबार में ताज़ा समाचार मिलने तक यहाँ भी बढ़त देखी गई। लंदन का FTSE 100 0.40% की उछाल पर था। फ्रांस के कैक 0.1% ऊपर आ गया और जर्मनी का डेक्स करीब सपाट कारोबार कर रहा था। All right. The government today said that around 54 crore 68 lakh permanent account numbers PAN has been linked with Aadhaar till June this year. In a written reply in the Rajya Sabha, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary said no PAN is deactivated for the reason of non-linking with Aadhaar. The PAN is made only inoperative if it is not linked with Aadhaar. He said over 2 crore people have paid 1,000 rupees for linking Aadhaar with PAN during period from 1st July 2022 to the 30th of last month. The minister said 2,125 crore rupees have been collected from these people. लोकसभा ने आज वर्ष 2023-24 के लिए पूरक मांगों के अनुदान और वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों के पहले भाग को मंजूरी दे दी है। चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक स्थिति के बेहतर बनाने और राजकोषीय घाटे को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों और गरीब कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। अब हम रुपए की बात कर लें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 38 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। And before we wind up, here's a look at the headlines, friends. Retail inflation at 5.55% in November 2023 remains under RBI's tolerance band. India's IIP growth rate rises to 16-month high of 11.7% in October 2023. And the key domestic share indices ended lower today amid volatility. Sensex tumbled 377.50 points and Nifty ends 91 points lower. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Thank you, Udayan, for being with us in the Akashvani studios. Namaskar. नमस्कार। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है। ही इज अ मेजर इन आर्मी, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। करण, तेरे पापा क्या करते हैं? रोहन, तेरे डैडी। करण, बताना। ही इज एन LIC एजेंट। दैट्स ग्रेट। कभी सोचा है हमें अचानक कुछ हो गया तो
करण के पापा